And because they have very less resources with them, their soil management also remains very poor. And if the soil is not healthy, then naturally the crops will also not be healthy. And the crops is not going to be healthy, then our health is also going to affect. So everything begins with the soil. And then there is like a lack of like irrigation facilities in non-monsoon season. Though India got independence 75 years back, but still the irrigation facility is not there in many of the places. Only few pockets it's available, and most of the agriculture still it remains like the rain-fed agriculture. And then usually there is like less innovation about like doing experiment, because it's a struggle for existence. So where they will do something for like innovations. And that's how, if the agriculture is rain-fed, then naturally in the winter season and summer season, the production goes down because there's not much cultivations, and eventually everything leads to distress migration. So this is a typical scene of agriculture you will see in India and in many parts of the world. And then we have to understand like there is a lot of spread of monoculture. Monoculture means if you just see your diet that you are eating, mostly you'll find rice, wheat and corn. These are dominating nowadays in all our plate that we eat. So slowly the world is moving towards the monoculture. And there is like the whole, if you see the government policies all over the world, you will find that it's more of encouraging the industrial farming, chemical farming, rather than organic farming. And what has happened is, over the period of time, like it has destroyed our ecosystems as well as food system. It is affecting the farmers, it is affecting the health of the city people also. Because I remember like many years back, like I always used to travel for the purpose of book distribution or other things. And we could just like stop nearby any river and then just take the water off from the river and drink it. But now that situation is not there. Those who have traveled in the rural areas, you will find you will not be confident enough to just take the water off the river and drink it. So we can see within say 3 decades of time, like how the situation has changed. At the same time, like previously, like about say 3-4 decades back, the cancer was like hardly we used to hear about cancer, like people getting affected. And nowadays you will see it is so much like so many people suffer from this kind of diseases, and plenty of other diseases have increased. Previously we never saw like nursing homes in villages and all other areas. So that means like the health of the people is going down. So this is the thing. Then now we will see what is like the solution that we can offer. So here we are working in Govardhan Eco Village, and we are also greatly benefited by the YF organization, who was doing research work in this field for many years. And they are like our technical partners. And they started this Wadi program in 1981, which I will explain later. And then about Seed for Life, that is the indigenous conservation and promotion of these things. Then this multi-layer farming, farmers training, livestock development means the cows, and government linkage. This is our program in nutshell. Now we will talk about this thing, that why we need to conserve the seeds. Because as you must have seen in some posters downstairs, that till 1970 India had over 110,000 varieties of rice. And once upon a time India had 2 lakhs varieties of rice only in India. Then you can think of the China and then other Southeast nations. So what happens is this biodiversity is such like
every area as per agroclimatic zones. The different plants were suitable for that, and it could provide nutritious food locally to the people over there. And this was very much essential for all of us to understand, because what has happened is the people have most of the time focused on monoculture, means you have a one hybrid variety and it is grown for the thousands of acres, and it completely destroys the biodiversity. And then we have to see what is the intention of going back to the organic and biodiversity things. What is the philosophy and intention behind this is to make farmers totally independent. And if you go for chemical farming, then it's absolute dependence on corporations who will provide seeds, fertilizers, and other irrigation facilities. Because if you see ancient time, all the farmers were totally independent. They never had to depend on anything from outside. And an organic farming is absolutely like sustainable, it's ecological, very little inputs that are necessary, and it gives a very generous gains to the farmers and enormous profit to the farmers. Whereas if you see the chemical farming, it's non-sustainable. It has got adverse environmental impact. It requires large inputs like chemical fertilizers, then seeds, irrigational facilities. And you just get comparatively moderate gains in that. It's not that you get a bumper gains in this. And the large profits goes especially to the seed companies and fertilizer companies. And that is why we have to understand that why agriculture exists to feed the people or to make money. This statement, all of us need to understand what is the purpose. Because now the food security is considered as not so important, but making money out of agriculture is becoming important. And that's why you see that all over the world there is so much of fertile land is there, and still people are dying out of hunger or are suffering from malnutrition. So just as somebody makes this choice, is going to make such a great impact on environment, on social conditions, economic conditions, and is so much beneficial for our future generation. Now you see 40% of all our food grains are fed to the animals so that they can be slaughtered. So all the people, because always say like if the world turns into organic farming, then we have such a lot of population, it will not be able to feed it. But it's absolutely untrue. Because you are feeding food grains to the animals to be slaughtered. It's better like you feed it to the people. It's a simple common sense. So this is what we need to understand. And then you just see like why this indigenous seeds, because they are the climate resilience and nutritionally they are superior, and risk is very low for the farmers. And if you see this rice and millets that are cultivated all over the places, it's like if you go to the temperate climates of Himalayas, to the tropical lowlands or marshy lands, or where there is a lot of floods is there. Like even if there is 2 to 3 meters of water standing for a month, still some varieties of rice will grow in that. That means for harvesting, you sit in a boat and go and cut the rice and bring it to home. So that's the area naturally gets flooded, but still nature made an arrangement, a kind of a rice can grow in that flooded water as well. And if you see the coastal regions like Kerala and Orissa, where sometimes the sea water comes inside, so the water becomes saline, it's a salty water. There are rice varieties who can come in salty water as well. That means the nature made complete perfect arrangement for everybody's sustenance, which we are disturbing in just thinking of making profit out of the agriculture.
And like some varieties like come in 60 days and some varieties will take 200 days. So that thing is there, like some varieties of rice, because like farmers, they depend everything, all the income from produce of like agriculture. So 60 days means like 2 months of time you can have a crop, you can eat or you can sell it. And 200 days, like usually the varieties which has got more nutritional properties are the number of days are more in that. And then you will find like 8.5 feet is the height of rice that is found in Nagaland. That means you cultivate in May and it comes for harvesting in October. And you can see like how much fodder will be available for the cows, because most of the hybrid varieties are very short ones. So naturally, then you need to go for buying the fodders. So you will see that there is a plenty of benefits that are there by converting into this. And so this is the place. This is called like a seed demonstration plot, where 106 varieties of rice are put in this, in the village Patradi in Wanganpada, in the taluk of Jawar. And this particular like where demo plots means the all farmers will come nearby areas, they will see the different varieties and they will choose whichever one they like it. In the previous slide we see that it is climate resilient. So I will show you this thing. You can see the previous slide, whatever you saw, so much rainfall came and the whole plot was submerged for 1 week of time. You can see how much water was flowing through that plot, because 1 week there was like excess rainfall that time. And this much of water flew through that plot of land. And still you could see in the previous slide that after the water was washed away, all the indigenous varieties of crops, they survived. And you can see the neighboring plots. It has become yellowish. Those who were like cultivating the hybrid varieties, that could not sustain in that. So this is what like different kinds of millets and everything comes up. And then we see like this rice and millets, it's so much collected. It has got a religious aspect. It has got a cultural significance also. And you will find that in plenty of our scriptures, like in the Charak Samhita and Shushruta Samhita and many other places, it's mentioned. And it became like part of a rituals. Rice mixed with turmeric, we throw it as akshada. It's always used in many religious ceremonies. And many of this rice has got medicinal varieties. It can be like, you can easily digest it and you can cure many diseases from that as well. And as a part of India's culture, this rice and millets, you will find when the arrival of monsoon was there, the certain kind of festivals were celebrated. Then when you are sowing the field, that time certain kind of festivals were celebrated. Then when you are transplanting it, it's also a festival. And eventually when you harvest it, you will have plenty of festivals in that. So whether it's a birth, whether it's a marriage, or at the end in the funeral, most of the things was related to our production of food crops. So now you will see that after rainy season, then you can have different kinds of pulses that they grow. So here we have a varieties of pulses that they grow. And then this awareness has to be there because of this like genetic engineering. All the biodiversity is getting destroyed. There is a biopiracy is also happening. And then globalization
is also affecting all over the world. And what we are trying to do here is to support the local marginal farmers. That is our main intention. And then conserve all the seeds from getting extinct. And third thing is, it's directly available to the people in the city. So the thing is like, it has to come from seed to table. That circle has to complete. From the farm, it has to reach to the kitchen. This is very important because if the city people don't consume these different varieties of millets, different varieties of tubers, and different varieties of rice, then farmers will not grow it. So the great awareness has to come for the people who are staying in the cities, and then you should choose what kind of food you want to eat. Because all the time people are discussing about the yield per acre. But we should be thinking about nutrition per acre. And you should be thinking about nutrition per plate that we are eating it. The less variety, less nutrients will be there for us. More varieties, the more nutrients will be there. So this is a simple formula we should remember. So all throughout the year and the different seasons, if you increase our use of different pulses, different kinds of rices, and the different kinds of millets, that's going to give you a healthy meal, a nutritious meal. It will be tasty also, and good for your own health, good for the health of the family, good for the health of future generations. And that's how the farmers will eventually survive. Because if you see the economic point of view, if the small farmers get destroyed, it's bad for the country's economy, because then what next option is the industrial farming. Industrial farming needs a lot of capital investments. And yield is not as gainful as this. So if any country has to become prosperous, it must protect its small farms and small farmers. And that's how the country will also become prosperous, the environment also remain intact, and the people who are staying in the cities also will be happy. Because you see, so many people in India still depend on agriculture or agriculture related businesses. If agriculture becomes economically not viable, where all these people will end up? And do you have that much jobs available in our industries for these many people? So you can understand how much the economic crisis that we are going to do it. In the sense if you see US or European countries, hardly 2 to 3% of the population is doing farming now. And all government policies all over the world are going in that direction where it will be useful for industrial farming. But at our country in India, it's very difficult for us to go in that way, because we have such a huge population. And as all of you know, those who know the science and how the education fields is going on, technology is improving in the world today. Because of the industrial revolution, industry started, but it required manpower to operate the machines. But now you see, you don't need that much of manpower, because you can use so many softwares and reduce the number of workforce, and then so much of artificial intelligence as well as robotics, you will be able to operate so many things. So that means in the cities also the job opportunities are going to become less. So this is what we are doing it, and this is the help that we give it to the farmers.
And this is, we conducted this kind of indigenous rice and millet festival in Govardhan Eco Village last year. And this kind of items were prepared over there. But then we saw like not many people come to the village, like come to all the way to the Govardhan Eco Village. So then we thought like, no, why not conduct it here? But here the thali will be little different because it has to suit to the city people. So there the things were different. And as far as the farmers are concerned, like as I explained, that what we are doing it is, one is Sit for Life, this one. And you want to, those who want to take photo, you can take. So what we are doing is the Sit for Life program, and that's we have our next speaker is Sanjay Patil from Bayev. Now he is the person like he made all these collections. Like sometimes he got just a 10 seed of one particular variety, and then he multiplied that for years together, and now that seed is available to us. So he traveled to very remote places and remote areas and collected those seeds. So to just collect or preserve one particular variety is not so easy. And especially you will find in a very deep tribal areas, only those people have preserved this indigenous seeds. And it takes years for you to build up this seed bank. And then another thing is, this is called a Wadi model. So you have a indigenous seeds. Because nowadays, whoever wants to do organic farming, their first question will be where the indigenous seeds are available. So our one program is to make that available. And the next program is how do you make the agriculture economically viable. For that purpose, you need to design your farmland. So in the Wadi model, you design your farmland into long-term, middle-term, and short terms. So you get income all throughout the year through different verticals. So in this, like we take the farmers for the village survey meetings, and then we take the farmers to the successful farmers' place, because farmer to farmer information exchange is very essential, because they can see your institution, you will be able to do it. But when they see the same farmer family, same number of people in the family, same type of land, water conditions, and geographical condition, topographical conditions, then they also gain the confidence. So that's how the Wadi exposure is there. Then we do the land survey, do the layout, and they do the plantations, and all kinds of trainings are given to them. And this is what the typical Wadi looks like, where you will find long-term is big trees of mangoes and cashews will be there. And in between will be intercropping, either of a floriculture or different vegetables. So this particular farmer was earning just 8,000 rupees in a year from his agricultural land. And he was working as a factory laborer. And when he came to our program, he could diversify his income generating verticals. So we started cultivating rice, vegetables, fruit trees, floriculture, cereals, and vermicompost. So almost like he could earn over 2 lakhs rupees from his same piece of land, which he was earning previously just as 8,000 rupees. So the thing is, we just need to support these kinds of small marginal farmers. Usually they have 2 to 3 acres of land. And because what happens is, say suppose somebody is a big landlord, he has a 50 acres of land. And if he has say 5 sons, then next generation will get 10 acres. And if he has 2 sons, then he becomes, in 3 generations, a big landlord will become a small marginal farmer. So whatever land you have to cultivate in such a way that you can get good income and you get a very good yield from that. So you need to have certain directions. So one is about the indigenous seeds that you have, and then diversify like this, cultivate, get into so many things, because there are still some farmers
who practically grow everything what they need from off their land. Only thing they need to buy from outside is just a salt, because they can't grow salt in their own fields. Otherwise, all their needs can come in that. And I asked those farmers, like, what about the rainfall? Like, sometimes there will be heavy rainfall, sometimes there will be less rainfall. So what he says, gave a very simple technique. Because of this biodiversity, let's say ragi. So he says, I have so many varieties. So one will come in a less rainfall, one will come in the average rainfall, and one will come in heavy rainfall. So either rainfall will be less, medium, or more. So he says, I will never go. This thing, one variety will definitely come, and that's how I can survive all throughout the generations. So this is a little bit about the farmers and why we should do this and which way we should do it. And then one of our main intention is what we should be doing it in organic farming. So usually whatever produce that comes from the land will be like perishable produce, non-perishable produce, and value-added and processed food. So perishable will be fruits, vegetables, milks, and flowers that will come. Non-perishable means grains, pulses, and oilseeds will come. And then value-added and processed foods is like making different kinds of attas, milling items, milk products, and all other things. Now what happens is a farmer, because if he just depends on the first category, that perishable produce, he has to sell within particular time available. Otherwise, like his whole produce will become zero. And then sometimes you will find like you get tomatoes 3 rupees or 2 rupees kgs, or cabbage 2 rupees a kg. Then you can imagine how much the farmers will be getting for their hard work, which they did it for all throughout the seasons. So that's why the farmer has to come out from this just selling the perishable produce. So he need to diversify himself, some part for the perishable, some part for the non-perishable, and some part for the value-added process. And when he does that, he can survive. Because all of you are aware, you are reading newspaper, you know how many farmers are committing suicide. Then you also know how much land is getting converted into non-agriculture land. And daily, so many number of farmers leave agriculture in India as well as all over the world. So this is the pathetic situation, and all of us in cities at least need like 3 times a day good food to eat, right? So the farmer has to survive properly, because if they don't survive properly, how you will get the proper produce in the market? So that's why you will find, like in our exhibition downstairs, you will find all the informations, you will find grains and some value-added products also, because farmers, when they do this value-added products, then they will be benefited. And now those people who are staying in the cities also need quick things like kind of a ready mix, all those things available, so that for they also have a less time. So that will becomes like the very good win-win situation for the farmers. So we are advocating this concept of family farmer, where if you know who is the farmer who is growing food for you, so what will be the advantage? First is there will be no cheating, no food adulteration. Those who want to do the research in this or get some information from there, you just Google about food adulteration and you will find so much of food adulteration is there. At the same time, synthetic food is also there. Synthetic milk is available, mawa, paneer, as well as chilies, turmeric, and so many things are available, which are artificial, means not just adulterated, but it's totally different. So we need to protect our health of our families. So this is like connecting and then understanding the farmer's need. If you say the 1970 and 2022, if you see the government people, what they were earning salary in 1970 and at present, so many times it has increased. But if you see the farmer's income has not increased. So then how the farmers will ever survive? Unless like we
take one step, understand their needs. They also are their families. They also want their children to be educated. And they, like we get so many allowances in the staying in the city, house rent allowance we get. And then if you are in some military and others, then for clothing also, like cleaning your clothes also, you get certain kinds of allowances. But the farmers practically get nothing from all these things. So first is we also benefit by getting a pure, unaltered, non-toxic food. At the same time, the farmers also understand your needs, and then he will be happy to preserve so many different kinds of varieties, and then eventually we will also benefit. So in nutshell, like why we have this so many varieties of ragis, so many varieties of rice and different kinds of pulses, because each one will give us a different kinds of nutrients. And eventually it will help for us to improve our health. One of the government person was explaining to me that if you see how India faced the corona and what was the system in the West. So compare with the certain countries in the West, India, we didn't have that much of facilities. But still, impact on us was less because we have a lot of forest and we have got a lot of medicinal herbs. And that acted as a support for the whatever medicines that were given. And I asked, like, I went to Jawar and Mokhada area, which is like hilly regions, and you will find very poor farmers staying over there. And that, especially after second wave of corona, many people were affected. So we asked him that, did you ever get corona? So, and then I asked him what the symptoms you got. So that means I could understand that corona wave also came here and they were also affected. Then I asked what diet you took. So then they just said, like, we have this jawar, and when we got the fever and cold and cough, we just made some, added some water, cooked it, added some buttermilk, and that's why we took it. Some people who had money, they went to government hospitals, but others, they just survived with whatever herbs, goodwill and other things was available with them, and with this kinds of millets, and they could recover from the disease. So we have a choice. So we can say we are the custodians of this. We are the farmers are custodians of this kinds of indigenous varieties, and all of you mothers, like, you are also custodian of different recipes, which you will hand over to your future generations, and keep this intact, the different kinds of seeds which farmers will produce it, and if you all consume it, prepare a different kinds of delicious dishes out of it, and then you can be a custodian of this rich tradition which you can hand over to your next generation. Thank you so much for your patient listening. I think we will take question answers after our next speaker speaks. Then it will be better, because then you will have some overall picture of the whole thing, and then we'll have enough time for questions and answers. Okay. Thank you very much, Prabhu. So, without further ado, we'll invite our next speaker. So, I'd just like to give an introduction about him. His name is Sri Sanjay Patil, sir. He has been working with BIF for the past 17 years. And by education, he's a chemical engineer. Okay, so it might sound a bit funny. So, chemical engineer. But for past 17 years, he is working with BIF, and his expertise is actually in indigenous crop diversity and conservation. So, just like Sanat Kaur was saying, he's the person who went around. Not only he works in Maharashtra, he also works in different places in Gujarat as well as Odisha, finding out very indigenous crops, varieties, and then propagating them through seed banks. Through his combined effort now, Govardhan Eco Village, our Govardhan Rural Development, we have also developed and established seed banks in villages, what we call as community seed banks. So farmers
who actually produce seeds, now they have a seed bank. Some of you may be knowing or not, maybe knowing, I'm not sure. But generally when farmers, they purchase seeds to grow a crop. So that only works for that season. After whatever is grown, those seeds you can't grow them again. So then again they have to go and purchase the seeds. But what we have, what we are trying to do with establishing community seed banks is that they can select indigenous varieties. So without further ado, we'd like to invite Sri Sanjay Patil sir to speak about biodiversity and conservation. Good morning, and today is a great day for us also, because first time we are going to interact all the work which we are doing at grassroots level with the grassroots level scientists who are the innovator over there in the field in the interior parts of the country. So just I want to introduce about my organization. I am working with BIF. BIF is non-government organization working in 13 states of a country since last 55 years, and started by Mahatma Gandhi ji, and we had a research at Pune, and some of you might know the naturopathy center near to Pune, and it's a foundation of BIF, and I'm with BIF since last 17 years, and some of them ask why you are in BIF and what you are doing these things, chemical engineering to sustainable agriculture things. So that's why I just want to say few. After completion, I BTech in chemical engineering from ICT. I was in as a scientist, and it was a great day for me. I was in research on natural cotton dyeing and finishing, and unfortunately there was an accident in a laboratory, and it has changed my on the way of life, and naturopathy and cow urine therapy cured classes. And that time also I face problem that I am a chemical engineer, then I had done my management degree, but I had no any agriculture degree. But good things happened. I had got an institute like BIF, and where there is no scope for a degree to work only with the communities and in the interior parts of the country. So I had started my journey from Jawar, where still now I had a base there, and then now in different parts of a country with different tribal communities on different program areas around agro biodiversity. So initially I had also had a thought when I came to Jawar. Jawar is around 120 kilometers from Mumbai. It's very near, but unfortunately still there are number of issues: malnutrition, then poverty, then related to agriculture there are number of problems, though it's much nearer to Mumbai. So one side prosperity is there, and one side problems are also very near to us. So when I gone to Jawahar in 2005-06, I had a thought I will change the things, and only technology is the solution to come out of all these problems. But within 2 years, I have found, I come to know that only technology cannot solve our problems, number of problems, social, economical, ecological, everything. Then I had a discussion with the communities. That time, as an engineer, I started to work on soil health, because soil is very important, and only solving the problem of soil fertility, we can change everything. That is my mind. And
I was searching for different technologies, different advances, and the type of rice, millets, beans, vegetal, climate resilient type, nutritionally rich type, good food, good quality, taste, and then number of things. And she had conserved that diversity, and that there we had started a program in 2014, and then scientific data pura aa gaya. Then BBC had taken a news, and then worldwide famous हो गई, seed mother of India. एंड लास्ट ईयर सी एड सो वो तो स्कूल में कभी गई नहीं सी जो उसको मराठी भी ठीक से नहीं आता है बट बिकॉज द विजडम रोल ऑफ विजडम इज देयर साइंटिफिकली जिनोमिक देन मोलिकुलर जेनेटिक्स एंड द न्यूट्रिशन एवरीथिंग वी हैड डन बट द बेस नॉलेज उनका दिमाग का है तो ऐसे देर आर नंबर ऑफ ग्रास रूट इनोवेटर इन द कंट्री इनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरत है अभी क्योंकि ये ग्रास रूट इनोवेटर जिंदा रहेंगे तो ही ये डाइवर्सिटी बचेगी एंड वी विल गेट अ फूड टू ईट तो एक स्टेटमेंट है हमारे गुरुजी IIM के उनका कि माइंड्स ऑन द मार्जिन आर नॉट मार्जिनल माइंड्स ऑन द मार्जिन आर नॉट क्योंकि हमने तो बहुत सारे डिग्रीज ले रखे हैं लेकिन और हमारा अप्रोच थोड़ा नैरो हो गया है तो डाइवर्स अप्रोच के लिए अगेन बैक टू द पीपल एंड बैक टू द कम्युनिटी नेक्स्ट प्लीज सो इंडिया इज अ वेरी रिच कंट्री जैसे राइस के बारे में मैंने बताया 2 लाख टाइप्स वैसे ही फॉर ऑल अदर क्रॉप्स नेक्स्ट प्लीज सो कल्चर के साथ पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है हेरिटेज प्रॉपर्टी है इट इज अ कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टी इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है सीड ये चीज शेयर एंड एक्सचेंज नॉट फॉर अ सेल जहांगीर जो वन ऑफ द ग्रेट बॉटनिस्ट थे उनके इसमें एक लॉ था कि आप ग्रेन बेच सकते हैं लेकिन नॉट सीड बेच नहीं सकते सीड बेचेंगे तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे यानी इतना विजडम स्ट्रांग था सीड कंजर्वेशन सीड शेयर एक्सचेंज में जेंडर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था देन उसके बाद इसको बेचा नहीं जाता था कोई कास्ट अपर कास्ट मिड लोअर कास्ट ऐसा कुछ भी नहीं था कोई भी कौन सा भी सीड लेके जाते थे तो ये सीड का ये है तो ये सारा नॉलेज कैसे रखा था सिंस ईयर्स ये लोगों ने तो इन पेंटिंग्स लास्ट का जो पेंटिंग है वारली पेंटिंग हमारे बहुत सारे PhD के थीसिस एक ही ये पेंटिंग पे हो सकते हैं क्योंकि पूरा राइस सीड का सोइंग हार्वेस्ट रेसिपीज और सब इसमें है पूरा नेचर इसमें एक भी ऑब्जेक्ट इसमें नॉन लिविंग है जो हर एक चीज में कोई जान इसमें है तो ये एक ही पेंटिंग देर आर नंबर ऑफ फेस्टिवल्स इन द कंट्री बीच का जो फोटोग्राफ है ये नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट का है वहां पे एक हिल है उसका नाम है अस्तंबा हिल अस्तंबा मीन्स अश्वत्थामा ओके तो सिंस ईयर देर इज अ फेस्टिवल इट्स अ फेस्टिवल ऑफ सीड महाराष्ट्र गुजरात एंड मध्य प्रदेश का बॉर्डर का वो प्लेस है और वहाँ पे वो फेस्टिवल होता है कब दिवाली के बाद 4 डेज का एंड जो भी हार्वेस्ट होता है न्यू हार्वेस्ट ऑफ दैट तो वो ऑफरिंग करते थे गॉड को यानी अश्वत्थामा को ठीक है वहाँ कोई टेम्पल नहीं है कुछ भी नहीं है लेकिन मोर देन 1.5 लाख लोग वहाँ पे आज भी आते हैं और शेयर एंड एक्सचेंज ऑफ सीड पहले चलता था अभी तो बहुत कम हो गए हो एंड वो जेनेटिक डाइवर्सिटी को जिंदा रखने का फेस्टिवल था यानी विजडम कितना स्ट्रांग था कि इवोल्यूशन हो रहा है नेचर में तो वो शेयर एक्सचेंज भी हो विद इन पॉपुलेशन जैसे जेनेटिक्स में हम बात करते हैं सिलेक्शन फ्रॉम द पॉपुलेशन आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक ट्रेड जीन्स वो सारा एक्सचेंज एंड जो भी ऑफरिंग होता था एकदम बेस्ट क्वालिटी मेज का कॉब सोरगम का बेस्ट कॉब जिसको गुड अच्छा यील्ड है पेस्ट डिसीज रेजिस्टेंट है गुड क्वालिटी एंड ऐसे ये फेस्टिवल्स हमारे थे तो ये सारा नॉलेज जो है फेस्टिवल्स में रिचुअल में पेंटिंग्स में वो तरीके से उन्होंने ये नॉलेज को भी जिंदा रखा था और ये बायो रिसोर्सेस की लेकिन आज वो नहीं हो रहा है सो देयर इज नीड टू रिवाइव दिस ट्रेडिशनल नॉलेज नेक्स्ट प्लीज प्रभु जी ने भी बताया कि डाइवर्सिटी लॉस कितना हुआ है फ्रॉम 4 लाख प्लांट स्पेसीज से 3 क्रॉप्स तक आ गए हम 4 लाख प्लांट स्पेसीज एस्टिमेटेड है वर्ल्ड वाइड 30 अराउंड 3 लाख स्पेसीज थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन है ओनली 30,000 उसमें 30,000 एडिबल है और 7,000 अंडर यूटिलाइजेशन है उसमें से 200 का ही डेटाबेस साइंस आज तक बना चुका है और वो
200 में से 30 पूरा वर्ल्ड को अनाज दे रहा है, और उसमें 3 में अभी इतना ये लेवल तक, वो 3 है जैसे बताया कि एक है कॉर्न, सेकंड है मेज एंड थर्ड इज व्हीट। हमारा अराउंड 65% फूड प्लेट ये 3 फूड आइटम से भरा हुआ है। तो हमारा फूड प्लेट का डाइवर्सिटी कितना कम हो गया है। हमने एक सर्वे लिया था विथ स्कूल्स कि बच्चों को बताया यू कैन गो इन योर होम एंड आस्क ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर आप क्या खाते थे, द प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2 नेक्स्ट डे, कि आपके फादर एंड मदर के साथ बैठो एंड देन यू कैन प्रिपेयर अ प्लेट, आप क्या खाते थे, देन मैं क्या खा रहा हूँ, ये तीनों प्लेट का कंपैरेटिव स्टडी किया। फादर एंड मदर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर का प्लेट जो था, फूड प्लेट था, अराउंड 65 फूड ग्रेन्स थे उसमें सीरियल्स थे, पल्सेस थे, ऑयल सीड्स थे, उसमें भी सीजनल वेरिएशन था, रीजनल वेरिएशन था, ठीक है ना, उसके डिफरेंट रेसिपीज थे, विद इन क्रॉप डाइवर्सिटी थी, राइस के बहुत सारे रेसिपीज, तो डिफरेंट हर एक रेसिपी के लिए इडली का अलग राइस था, पोहा का अलग राइस था। तो ये डाइवर्सिटी विद इन क्रॉप एंड विद इन फूड रेसिपीज एंड विद इन द एग्रोक्लाइमेटिक जोन थी, जो पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है आज। तो इसीलिए इसका फादर एंड मदर का प्लेट में वो 27 तक आ गया, एंड बच्चों के प्लेट में 7, और 7 में भी क्या था, ये महाराष्ट्र में हमने किया था सर्वे, शिमला मिर्च, गोभी, कॉलीफ्लावर, देन कैबेज एंड देन पोटैटो, जो वो रीजन का इंडिजिनियस फूड ही नहीं था। और शहर में तो पिज्जा, बर्गर, फूड प्लेट क्या होगा, पिज्जा होगा, बर्गर होगा, मुझे भी ज्यादा पता नहीं अभी, ठीक है ना। तो ये इतना प्रॉब्लम, तो जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी नैरो हो गई, हमारे हेल्थ के प्रॉब्लम बढ़ गए हैं। तो फूड प्लेट को कैसे डाइवर्सिफाई अगेन करें, वो हमारे लिए एक चैलेंज है। नेक्स्ट प्लीज। जो भी मार्केट में फूड आ रहा है वो कॉर्न बेस्ड फूड है, कौन से कुछ भी हम बना सकते हैं, अभी ऐसा सब हो गया है। एंड दीज आर द हाइब्रिड कॉर्न्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादा है, स्टार्च ही ज्यादा है। वी हैड आइडेंटिफाइड डिफरेंट मेज टाइप विच आर रिच इन न्यूट्रिशन ऑल्सो। तो पूरा वर्ल्ड बोलता है कि मेज इज ओरिजिन ऑफ मेक्सिको, लेकिन आज हम ये लेवल तक आ गए कि इंडिया ऑल्सो सेकेंडरी सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ मेज। पता नहीं कितने साल पहले आया होगा और वहां पे वो डोमेस्टिकेट हो गया। ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स है। नेक्स्ट प्लीज। यदि देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड एफएओ का स्टेटमेंट है कि अराउंड 75% डाइवर्सिटी ऑलरेडी विद इन क्रॉप्स की लॉस हो चुकी है। जो भी बची है उसको कॉन्जर्व, रिवाइव एंड अगेन यूज में लाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे पास टन्स ऑफ ग्रेन्स है, फूड है, लेकिन फिर भी माल न्यूट्रिशन हमारे घर पे है। एक तो ओवर न्यूट्रिशन है, दूसरा माल न्यूट्रिशन। तो इसको हम कैसे एड्रेस करें? क्लाइमेट चेंज के इश्यूज तो है ही हमारे पास। बारिश होगा तो इतना होगा कि 1.5 मीटर पानी भी भर सकता है, एंड एट सम प्लेसेस देयर मे बी नो रेन, ओनली मॉइस्चर। हम क्या ग्रो करेंगे? टेक्नोलॉजी के पास आंसर नहीं है। नॉट मोर देन 4,000 2,000 varieties developed by our research institutions, but in nature there are thousands, lakhs of origin, still it is there. Next please. So these are the issues. हम क्या ग्रो करेंगे? है हमारे पास टेक्नोलॉजी के पास, there is no answer for this type of situation. माल न्यूट्रिशन, फूड पैकेट्स बांट के माल न्यूट्रिशन खत्म होने वाला नहीं है। Agri and nutrition, how we can link it together? Agriculture is something different now and nutrition program is something different. इसको कैसे लिंक करें? तो फूड सिस्टम एज अ होल, ये हमारे लिए आगे का चैलेंज है। नेक्स्ट प्लीज। These are the rice. मुंबई में वाड़ा कोलम पता है आपको, अम्बे मोहर पता है, ठीक है, और सुरती कोलम, इंद्रायणी, देन और अम्बे मोहर, बासमती, ठीक है। आपको पता है वाड़ा कोलम जो मुंबई को बहुत बेस्ट राइस मिलता है, इज इट ओरिजिनल है? 99.9% डुप्लीकेट है, क्योंकि वाड़ा कोलम इज फ्रॉम अ वाड़ा ब्लॉक ऑफ पालघर डिस्ट्रिक्ट, ओके। एंड आई हैड सर्वेड 35 villages. I had listed only 200 farmers and total area not more than 500 acre. तो पूरी दुनिया के हर एक मॉल में वाड़ा कोलम मिल रहा है। तो
वी आर ईटिंग ब्रांड्स नॉट अ फूड, एंड उसमें भी हाइब्रिड वाडा कॉलम आ गए। तो उसका ओरिजिनल शायद आप में से किसी ने खाया होगा वाडा कॉलम। वाडा ओरिजिनल वाडा कॉलम की स्पेशलिटी कौन से भी इंटरनेशनल गाइडलाइन में नहीं है, वो है लोगों के दिमाग में। उसका ओरिजिनलिटी क्या है, उसके ऊपर हमने राइस बनाया कि उसके ऊपर दाल डाल दी कि जितना भी राइस डालेंगे वो सोख लेता है। ऐसा कोई टेस्ट कौन सा भी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन के गाइडलाइन में है ही नहीं, वो लोगों के। तो अभी हमने वो आइडेंटिफाई किए हैं ओरिजिनल, आफ्टर 3-4 इयर्स शायद आपको ओरिजिनल वाडा कॉलम मिल सकता है। तो ये है राइस की डाइवर्सिटी। जैसे बोल रहे थे अबाउट 350 ओरिजिन्स आज तक हम आइडेंटिफाई करने में थोड़ा कामयाब हो चुके हैं। इसमें राइस फॉर डिलीवरी वीकनेस, राइस एज ए इंस्टेंट एनर्जी सप्लाई, राइस फॉर फ्रैक्चर रिकवरी, राइस फॉर फीवर रिकवरी, इडली के लिए अलग राइस, पोहा के लिए, पार बॉयल राइस, तो हर एक पर्पज के लिए एक अलग राइस था। राइस फॉर लैक्टेटिंग मदर, वो अलग राइस था। तो ऐसे सारे हमने आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। तो ये डाइवर्सिटी इतना लॉस हो चुका है। तो राइस इज नॉट जस्ट अ फूड टू ईट, इसमें भी इतनी सारी डाइवर्सिटी की जिससे हर एक एंड यूज हर एक का अलग था। नेक्स्ट प्लीज। आज ज्यादातर हम मिलेट के बारे में समझने के लिए जानने के लिए आए। सो दीज आर द मिलेट क्रॉप। वी नो रागी, बट देर आर डिफरेंट मिलेट टाइप्स। फर्स्ट वन इज द रागी, सेकंड इज द फॉक्सटेल मिलेट, देन थर्ड लिटल मिलेट जिसको वरई भगर बोलते हैं, देन प्रोसो मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, देन बार्नयार्ड मिलेट। नेक्स्ट प्लीज। सोरगम, महाराष्ट्र की यदि हम बात करेंगे, ज्वार जिसको बोलते हैं, ज्वार का रोटी खाते हैं ना हम, और बहुत सारे रेसिपीज भी हो रहे हैं जो हमारे फूड प्लेट से बहुत कम हो चुका है, क्योंकि व्हीट हमारे फूड प्लेट का पार्ट बन गया, इवन एट विलेज लेवल ऑल्सो एंड इवन अर्बन लेवल ऑल्सो, क्योंकि 2 रुपीज व्हीट हर एक घर में आज जा रहे हैं। तो ये हमारा सोरगम डाइवर्सिटी खत्म। हम सर्च किया कि कहाँ सोरगम होता है पूरे देश में, तो हमारा डेटा जो बता रहा है कि 250 मिलीमीटर में भी ज्वार आता है एंड 5000 मिलीमीटर में भी सस्टेन होने वाले टाइप है। तो रेंज देखिए कितना है। तो सोरगम वन ऑफ द मेजर फूड हमारे प्लेट का था सिंस ईयर्स। तो सोरगम के बारे में जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि गुड सोर्स ऑफ डाइट, फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम जिनको है उनको सोरगम खाना ही है। देन एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा है इसमें। देन डायबिटीज के लिए वन ऑफ द बेस्ट फूड सोरगम है। सोरगम में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट प्लीज। तो दिस इज द सोरगम डाइवर्सिटी विच वी हैव आइडेंटिफाइड डिफरेंट ट्राइबल लोकेशन अक्रॉस महाराष्ट्र। हर एक के नाम भी बहुत सारे अलग है। दगड़ी, दगड़ी मीन्स स्टोन, ठीक है, उसका एकदम हार्ड होता है पेनिकल। तो नाम के पीछे भी साइंस है, नहीं तो हम आज सब कोड लैंग्वेज में एवरीथिंग इसको सब दबा के रखा है क्योंकि आईपीआर पेटेंट के नाम से, लेकिन दीज आर द ओपन सोर्स सिस्टम्स एंड नॉलेज। डुकरी, देन टाड़की, हमारा सर जैसा ये है, इसके लिए उसका नाम ये है। चिकनी, चिकनी मीन्स स्टिकी, स्टिकी इतना स्टिकी कि उसका रोटी बना ही नहीं सकते। तो हम सर्च किया कि क्या बनाते हैं लोग, तो ये पापड़ उसका बहुत अच्छा था, ठीक है। वी हैड गॉट 1 पेनिकल ओनली दैट चिकनी, देन नाउ इट्स इन 400 एकर्स। 2010 में हमने ये सर्च ये किया था अलग अलग लोकेशन पे। तो हर एक का कुछ अलग नाम है और नाम के पीछे का भी साइंस बहुत बड़ा है। तो ये इटिमोलॉजी के इसमें अंडर आता है। तो वी हैड डॉक्यूमेंटेड ऑल, क्योंकि फाइनली आईपीआरएन इसमें बासमती का जो एग्जाम्पल देते हैं, बासमती को टैक्सामती कर दिया, शायद आपने पढ़ा भी होगा। यूएस पेटेंट जो गया बासमती एंड टैक्सामती, ठीक है, ग्रेन तो सेम ही था लेकिन वो स्वेलिंग परसेंट में पकड़ा गया कि इंडियन बासमती जो है उसका स्वेलिंग ज्यादा होता है, लंबाई, ठीक है, आफ्टर कुकिंग है, ठीक है ना। वैसे हल्दी का भी, हल्दी सिंस ईयर्स एजेस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसका साइंटिफिक इवैल्यूएशन पूरा कर रहे हैं। देन द इंफॉर्मेशन शुड बी इन द ओपन सोर्स, कि ये पूरी सबकी है ये नॉलेज सबका है, बायो रिसोर्सेज सबके। इसको स्प्रेड इतना करो कि इसका मोनोपोली खत्म हो जाए एंड फार्मर्स एंड एवरीथिंग, कंज्यूमर को भी मिले एंड फार्मर को भी ऐसे ऑप्शंस मिले। नेक्स्ट प्लीज। हाइट,
15.5 फीट हाइट। तो फूड भी है, फॉडर भी है। ये लास्ट मंथ का फोटोग्राफ है। ठीक है, ये यहाँ तक है शायद, मुझे भी अभी दिखा। हाँ, ये हाइट है इसका। अभी जो वैरायटीज आए हैं मार्केट में, नॉट मोर देन 3.5 फीट हाइट। तो कहाँ से फॉडर लाएंगे? फॉडर नहीं है तो हम हमारे लाइव स्टॉक पॉपुलेशन को कैसे ये करेंगे? लाइव स्टॉक फॉडर नहीं है, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन कम हो गया है, ठीक है ना। एंड देन फॉडर क्रॉप्स आर समथिंग डिफरेंट एंड ग्रेन क्रॉप्स आर समथिंग डिफरेंट। इसको हम कैसे ये करें? तो हमें फूड भी चाहिए, फॉडर भी चाहिए, एंड दीज आर द डिफरेंट रेसिपीज। बच्चों को क्या देते थे वो न्यूट्रिशन के लिए? इसके लड्डू बना के देते थे सोरगम के। एंड 1972 का जो मैं एक स्टडी कर रहा था कि 1972 का जो फेमाइन हुआ था, व्हाट दे हैड, उन्होंने क्या खाया होगा? तो इनके घर में क्विंटल्स ऑफ एक ग्रेन थे, और जस्ट थोड़ा सा लेना है, लिक्विड ग्रेल बनाना है, नहीं नमक डाल के पानी गर्म करके उसके ऊपर वो कितने महीने जिंदा रहे हैं लोग। तो इतना हाईली न्यूट्रिशियस एक सोरगम टाइप है। नेक्स्ट प्लीज। बाजरा, बाजरा अनदर मिलेट, पर्ल मिलेट और स्पाइक मिलेट, वो भी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, विटामिन कंटेंट भी हायर है, इजीली डाइजेस्टिबल है, फोलिक एसिड कंटेंट बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट प्लीज। अभी महाराष्ट्र में ओनली एक ही वैरायटी बची हुई है बाजरा की, एक ही बची हुई है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में, ठीक है। रागी के बारे में तो आप सबको पता है, रागी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है, आयरन कंटेंट भी ज़्यादा है, इवन एंटीऑक्सीडेंट लेवल भी बहुत ज़्यादा है, वन ऑफ द मेजर फूड फॉर डायबिट्स अभी हो गए, कोलेस्ट्रॉल लेवल रिड्यूस करने में बहुत ही काम आती है। नेक्स्ट प्लीज। ये डाइवर्सिटी है। तो हमने सर्च किया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, अभी 150 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रागी हमारे पास है विद इन रागी। दिस इज डाइवर्सिटी। उसमें कैल्शियम रिच रागी, आयरन रिच रागी, एंटीऑक्सीडेंट रिच रागी। तो अभी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि स्लोपी लैंड पे, जहाँ पे कुछ नहीं आता है वहाँ पे रागी होता है, ठीक है। तो वहाँ गुड यील्ड भी कैसे मिले, न्यूट्रिशनली रिच भी है, सॉइल का अच्छी फर्टाइल भी करें एंड फॉडर भी मिले। नेक्स्ट प्लीज। ये भी आपको पता है, ग्रेन शायद मैं फोटोग्राफ नहीं डाल सका इसमें, ये वरई है, वरी जिसका राइस हम बनाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। फॉस्फोरस कंटेंट बहुत ज्यादा है इसमें। नेक्स्ट प्लीज। या तो इसका भी स्टोरी है। ये 2011 में शाहपुर एक ब्लॉक है ठाणे डिस्ट्रिक्ट का, तो वहाँ पे एक फार्मर के यहाँ पे ऐसे जा रहे थे और वो बोले कि साहब ये बहुत अच्छा है, आप ये लोगों के पास फैलाओ, ठीक है। एक ही प्लांट दिया था ऐसा, एक दिया था। तो 5 years ऑफ आवर कंटिन्यूस प्यूरिफिकेशन अपग्रेडेशन वर्क अभी 2000 हेक्टर में स्प्रेड हो गया सीड, अभी वो लैक्स ऑफ पीपल के पास चला जाएगा। तो दिस इज अ वेरी गुड यील्डिंग, फार्मर को बहुत अच्छा पैसा मिला। 52 रुपीज पर केजी रॉ वरई को अभी ये मिल रहा है, क्योंकि अभी कोविड की वजह से ये पॉजिटिव थिंग हो गई है पाकिस्तानों के लिए, मिलेट का डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हेल्दी फूड, फंक्शनल फूड, न्यूट्रिशियस फूड, सो वरई इज वन ऑफ देम। तो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हमने आइडेंटिफाई किए। नेक्स्ट प्लीज। या ये कोडो मिलेट है, इसका यदि देखेंगे फाइबर कंटेंट राइस के कंपैरिजन में, राइस में 0.2 ग्राम पर 100 ग्राम फाइबर कंटेंट है। ये कोकन रीजन में ग्रो होता था पहले, अभी 15 या 20 फार्मर बचे हुए हैं, ये क्रॉप लगा रहे हैं महाराष्ट्र में। कर्नाटका में कुछ जगह पे अभी स्प्रेड हुआ है। रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज को कम करने में काम में आता है, एंड देन जॉइंट पेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द फूड था। नेक्स्ट। बार्नयार्ड मिलेट, ये हिली रीजन में जहां पे दूसरा कौन सा मिलेट नहीं होता है, देयर दिस मिलेट कैन ग्रो इन सातपुड़ा हिल्स ऑफ महाराष्ट्र। सो यहाँ पे इसलिए भी रिच इन फाइबर कंटेंट है, डायबिट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट फूड है, वेट रिडक्शन के लिए भी वन ऑफ द अभी साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि इसका कंजम्पशन से वेट रिड्यूस होगा। एंड देन वी कैन कीप दीज ग्रेन्स, इंटैक्ट ग्रेन्स फॉर एटलीस्ट 35 to 50 years। एक ही ऐसा ये क्रॉप है कि जिसका हम सीड इतने साल तक रख सकते, ग्रेन नॉट अ सीड।
तो इसका कवर बहुत हार्ड होता है। एंड देन नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट का पावरा कम्युनिटी, हम घर पे जाते हैं तो पूरा झोपड़ा दिखता है, लेकिन ऊपर इनके घर पे एटलीस्ट 5-10 क्विंटल एक ग्रेन होते, क्योंकि दे नोज फूड सिक्योरिटी, कैसे क्या खाए हम ऐसे एडवर्स सिचुएशन में। एटलीस्ट 5 ईयर का स्टॉक होता है उनके यहाँ पे ये मिलेट का। तो ये विजडम का रोल इसमें है कि क्यों रखा है उन्होंने आज भी उसको जिंदा। तो वजह है कि उसका स्टोरेज लाइफ बहुत ज्यादा है ग्रेन्स का। नेक्स्ट प्लीज। ये इसका क्रॉप अभी लार्ज स्केल मल्टीप्लिकेशन में उसमें हमने सिलेक्शन किए, साइंटिफिक वर्क किया, अभी ये स्प्रेड हो रहा है क्योंकि यील्ड बहुत कम हो गया था, मिक्सचर हो गए थे, तो अभी ये पूरा पार्टिसिपेटरी वे से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। देन फॉक्सटेल मिलेट, ये भी शायद आपको पता होगा कि हमारा पितृपक्ष में यूज होता है ज्यादातर। इसका राइस बनाते हैं, बघर बनाते हैं, तो ये भी ब्लड ग्लूकोज लेवल रिड्यूस करने के काम में आता है। इसका प्रेजेंटेशन बाद में शेयर करेंगे ग्रुप के ऊपर। नेक्स्ट प्लीज। एंड अलॉन्ग विथ अदर साइंटिफिक डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन। ये भी एक मिलेट का ही टाइप है, लिटिल मिलेट। डाइजेस्ट इजीली डाइजेस्टेबल है, ये इनहांस करता है डाइजेस्टिबिलिटी को, आयरन कंटेंट भी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट प्लीज। सो दिस इज द न्यूट्री प्रोफाइलिंग। यहाँ पे यदि देखेंगे हम राइस के कंपैरिजन में, राइस में 0.2 ग्राम पर 100 ग्राम फाइबर। स्विच ऑन। तो यदि देखेंगे तो इन कंपैरिजन टू राइस एंड व्हीट, in fiber content, even calcium in rice around 45 milligram per 100 gram, and then in case of finger millets more than 376 to 5. So like that each millet has its own nutrition benefits, and then इसके बहुत सारे recipes भी है. Next please. So the, yeah, previous slide please. Yeah, next please. So abhi what we are doing, Prabhuji also shared about our program. So our program base is 4C approach: conservation of diversity, whatever exists till now, identify it, then cultivate it through research, iska yield kaise improve kare, then scientific research on nutrition, genomic testing, and then everything for agromorphology. देन कंजम्पशन में कैसे आए एट कम्युनिटी लेवल भी, क्योंकि गांव के फूड प्लेट से भी ये गायब हो चुका है। जैसे वो बच्चों का 1 महीने सर्वे बताया था, तो वो विलेज लेवल पे भी कंजम्पशन में कैसे है। एंड देन जो सरप्लस होगा उसका मार्केट लिंकेजेस थ्रू ब्रांडिंग, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये हमारा वर्क। ये वर्क 2008 में हमने शुरू किया था। अभी अराउंड 650 ओरिजिन्स हम आइडेंटिफाई किए अलग अलग लोकेशन पे। टोटल 7 सीड सेंटर्स बनाए हैं महाराष्ट्र में। इसमें राइस, मिलेट्स, बीन्स, वेजिटेबल्स, देन रूट्स, ट्यूबर्स, जो नीचे डाइवर्सिटी हमने पालघर डिस्ट्रिक्ट का एग्जिबिट किया है। तो ऐसे अलग अलग लोकेशन पे ये काम चल रहा है। नेक्स्ट प्लीज। This is not a research station photograph. This is from a tribal location, जहाँ पे वारली एंड कोकना ट्राइबल। सो हमारी एक सोच होती है कि गांव के लोगों को पता नहीं है, ऐसा नहीं है। दे कैन डू बेटर देन अस। उनको माइग्रोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, जीनोमिक कुछ पता नहीं, बट दे नो व्हाट दे वांट। यहाँ पे वो आते हैं, thousands of people select करते हैं varieties, because we have very limited approach of selection of crops and varieties, but they, उनको पता है लैंड टाइप कैसा है, सॉइल टाइप, गुड यील्डिंग टाइप कौन सा है, पेस्ट डिसीज रेजिस्टेंट चाहिए, टेस्ट के लिए अच्छा भी चाहिए, मार्केट में बेचने के लिए अलग टाइप चाहिए, हमारे घर के खाने के लिए अलग चाहिए, फॉडर भी चाहिए, फूड भी चाहिए, सॉइल को भी देखना है हमें। ऐसा नहीं है सिर्फ ग्रेन देख कर आ गए, काट दिया, बेच दिया, ऐसा नहीं है। तो ये हमारे जो अप्रोचेस है हमें बदलने पड़े फॉर सो पार्टिसिपेटरी वेज, ब्लेंडिंग कम्युनिटी नॉलेज एंड विजडम विथ साइंटिफिक। तो ये हमारा एक काम शुरू हो गया। नेक्स्ट प्लीज। ये सिस्टम है हमारी इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर क्या बोलती है, पूरा लैंड को प्लान करो और उसके ऊपर ही क्रॉप कल्टीवेशन लो, बट दे हैव देयर ओन सिस्टम फ्रॉम टॉप हिल टू बॉटम, कौन से प्लेस पे विच क्रॉप टू ग्रो, हाउ टू ग्रो, सॉइल फर्टिलिटी को भी मेंटेन करना है, क्वालिटी फूड भी आना है, फॉडर भी आना है, और पूरा बायोडाइवर्सिटी को भी कॉन्जर्व करके रखना है। तो रिवाइविंग दिस सिस्टम, यही हमारे पास एक ऑप्शन अभी है। नेक्स्ट प्लीज।
हम कर रहे हैं कुछ इम्प्रूवमेंट इन कल्टीवेशन, यील्ड कैसे इम्प्रूव करें उसके लिए काम कर रहे हैं, उसका कंपैरेटिव साइंटिफिक कर रहे हैं। तो लोग सीइंग इज बिलीविंग। आज तो हम पावर पॉइंट में बहुत अच्छा लग रहा है, फार्मर बिलीव नहीं करता पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या फोटोग्राफ। सीइंग इज फील्ड में, तो इसीलिए फील्ड में पूरा वर्क ऐसे सेंटर्स बनाते दिखाते लोगों को। हमारी पूरी टीम गांव के लेवल पे ये काम करती है। नेक्स्ट प्लीज। लोगों को सिखा रहे, ओनली मल्टीनेशनल्स एंड सीड कॉर्पोरेशंस प्रिपेयरिंग अ क्वालिटी सीड, व्हाई नॉट आवर फार्मर एट विलेज लेवल, ग्रास रूट लेवल, दे आर डूइंग बेटर बेस्ट क्वालिटी सीड्स एट विलेज लेवल ओनली। यहाँ पे गांव की महिला दे आर सिलेक्टिंग बेस्ट पेनिकल्स, सिलेक्शन फ्रॉम पॉपुलेशन, जेनेटिक्स उनके अंडरस्टैंडिंग से वो सिलेक्शन कर रहे हैं सारा। नेक्स्ट प्लीज। ये फिंगर मिलेट का पूरा फील्ड है, या ये फिंगर मिलेट जो देख रहे हैं, ये फिंगर मिलेट रागी का खेत हम देख रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पे ये राइस फॉर डिलीवरी वीकनेस, इंस्टेंट एनर्जी सप्लाई राइस, लैक्टेटिंग मदर के लिए, ये भी आइडेंटिफाई हो गया है थ्रू साइंटिफिक रिसर्च। इसको अभी आगे जाके मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट प्लीज। ये सारे बीन्स है, जो भी हमारे पास बीन्स है हर एक को पानी चाहिए, बट दीज आर द टाइप्स विच कैन ग्रो ऑन रेसिडुअल मॉइस्चर। पानी नहीं हो तो भी मॉइस्चर पे यह आ जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। इसमें हॉर्स ग्राम जो है वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो हमारे फील्ड में से गायब हो चुका है। कुड़द बोलते हैं, कुड़द या हुलगा भी एक वर्ड है, मराठी में हुलगा, कुड़द हिंदी में, एंड हॉर्स ग्राम। इसमें अराउंड 17% वेट बाय वेट प्रोटीन कंटेंट है, और हम प्रोटीन सिक्योरिटी के लिए प्रोटीन पैकेट्स खा रहे हैं। दीज आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। इतने सारे प्रोटीनियस फूड अपने पास है अभी। नेक्स्ट प्लीज। इसमें 3 मंथ हार्वेस्ट वाला, 6 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर कंटिन्यूस, तो प्रोटीन सिक्योरिटी घर में आ सकती है। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट कि हर घर में ये सारे सीड्स कैसे जाए कि ईयर राउंड उनको प्रोटीन फूड मिले। नेक्स्ट प्लीज। ये मेज के बारे में जो बात करें, दीज आर नॉट प्लास्टिक मेज, दीज आर इंडिजिनियस मेज। So it has taken around 8 years to select, purify, multiply. Next please. And each one has something different nutrition. Again next. न्यूट्री गार्डन, जैसे टेरेस गार्डन आप करते हैं तो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स, सो ईयर राउंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्री फूड। सो आपके लेवल पे भी पॉट में भी बहुत सारे कर सकते हैं चीज़ें, बैकयार्ड हो गई तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ईयर राउंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, सो उसके पैकेट्स बना रहे हैं। तो वो जो ग्रुप है बीच में, तो दे हैड अ सेल सीड ऑफ 27 lakhs फ्रॉम द विलेज इन कोविड पीरियड। ठीक है, देर इज नो एनी बिल्डिंग, नो एनी पैकिंग सेंटर इन द विलेज। दे हैड प्रिपेयर्ड अ क्वालिटी सीड ऑफ वेजिटेबल्स एंड सप्लाई टू nearby cities, Pune, Nasik, and different government programs also for Nutri Gardens. Next, please. So, this is again very important source of nutrition. जंगल का खाना, फॉरेस्ट फूड, लेकिन हमारी सोच अभी बने कि जंगल में जो है वो अच्छा नहीं है, पॉइजनस है, बट दे नोज बेटर, उसमें पॉइजनस मैटर भी है, उनको पता है उसको कैसे, वो अल्कलाइड्स को कैसे निकाले। रूट्स एंड ट्यूबर बहुत अच्छे टाइप से रीच, इसमें कुछ ट्यूबर्स हैं जो डायबिट्स, फूड फॉर डायबिट्स के लिए भी ये हुए साइंटिफिकली हुए कि वेरी स्लो रिलीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ऐसे भी कुछ रूट्स एंड ट्यूबर्स आइडेंटिफाई हो गए कि एक ग्लास ले लिया उसका लिक्विड ग्रेल और 1 or 2, तो दिन भर खाना खाने का जरूरत नहीं है, तो एनर्जी भी मिलेगी एंड देन विल गेट अ गुड फूड आल्सो। नेक्स्ट, these are the wild vegetables, non cultivated food। तो आगे जाके in climate change these are the source of food। tree as a source of leafy vegetable, tree as a source of oil, तो we are working on that also कि इसको कैसे प्रमोट करें, क्योंकि अभी नीचे का जमीन शायद नहीं मिलेगा काम करने के लिए, ऊपर का जमीन चाहिए। एक ट्री 2 क्विंटल सीड 50% ऑयल कंटेंट, इतना क्वांटिटी हमें मिल जाएगा फॉर इसके लिए। इवन इसमें वेजिटेबल्स भी इसको ड्राई करके रख सकते हैं, वो भी काम हमारा साइमल्टेनियसली शुरू है। तो सरप्लस जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग करके इसको ड्राई करके पैकेजिंग का भी आगे काम कर सकते हैं, क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी भी बचनी चाहिए एंड अलॉन्ग विद दैट सोर्स ऑफ इनकम भी मिले, एंड इसको प्रमोट भी कैसे करें। नेक्स्ट प्लीज। These are the real
साइंटिस्ट फ्रॉम ग्रासरूट। जो पद्मश्री की बात मैं कर रहा था, ये पद्मश्री जी है हमारी, स्कूल में तो कभी गई नहीं, बट रिसोर्स। दूसरी जो है जिनको नेशनल जीनोम अवार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टॉप मोस्ट एग्रीकल्चर अवार्ड इनको मिला है। ऐसे ऐसे हर एक गांव में, हर एक घर में ऐसे साइंटिस्ट आज भी है, तो डॉक्यूमेंटेशन वो कर रहे हैं। ऐसे कौन इनोवेटर है जिनको सपोर्ट की भी जरूरत है, तो इनको सपोर्ट करेंगे तो ही डाइवर्सिटी बचेगी, एंड इनको हम कैसे आगे लेके जाए फॉर द बेनिफिट ऑफ मासेस। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट साइड का जो है फोटोग्राफ, वो नेशनल जीन बैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इंटरनेशनली, बट वी नीड अ जीन बैंक एट विलेज लेवल। एक सीटू जीन बैंक है, वी कैन कीप सीड फॉर 75 years, but we need live gene bank in the field with the people, ठीक है, and it should be every year it should cultivate and evolve, because ऐसा नहीं कि ये जीन बैंक में हमने पैसा बंद रखा है अपने बैंक्स में, वैसे कि ये एवरी ईयर इसको जाना है, क्योंकि क्लाइमेट रेजिलेंस आना इम्पोर्टेंट है एंड इजी अवेलेबिलिटी। वहाँ वो जीन बैंक से वहाँ सिक्योरिटी है एकदम, यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन ये ओपन सोर्स भी है, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटर्स हमें आगे जाके बनाने हैं अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स आल्सो। नेक्स्ट प्लीज। ऑन कल्टीवेशन थ्रू ऑर्गेनिक, सीड टू हार्वेस्ट, हार्वेस्ट टू पोस्ट हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट टू प्लेट, ये इसके लिए पूरा ऑर्गेनिक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हम बना रहे हैं, सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो, क्वालिटी प्रोड्यूस भी हो। क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर का यह है कि नाइट्रेट % बढ़ गया तो न्यूट्रिशन डाउन हो रहा है हमारा फूड ग्रेन्स का, ठीक है, पेस्ट डिसीज आ रहा है, तो सॉइल को भी हेल्दी रखे और नॉन केमिकल कल्टीवेशन ऑल दीज इंडिजिनियस रिसोर्सेस। नेक्स्ट प्लीज। रिवाइविंग ट्रेडिशनल फूड रेसिपीज, उनके पास भी बहुत अच्छे रेसिपीज, वो हम अभी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं प्रॉपरली हर एक क्रॉप्स के। नेक्स्ट प्लीज। ऑल्सो सम मॉडर्न रेसिपीज जो आज हम टेस्ट भी करने वाले हैं। यस प्रभु जी। या सो फिंगर मिलेट, पापड़, लड्डू, रोटी, खीर, लिक्विड गुरेल, चकली, अम्बील, the number of recipes we had documented this thing. Next please. Next. Also आज तो हम इडली डोसा सब बना रहे हैं, नीचे हमें टेस्ट भी करना है आज बहुत सारे रेसिपीज। नेक्स्ट प्लीज। Next please. Also we are developing some products through standardization and nutri profiling, FSSI, everything, so that communities can get good income through these sale of these products. Next please. सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारे लिए है कि ये नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, स्कूल्स के बच्चों को तो पता ही नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस, we know all about the world, but our region, our agroecology zone, we don't know anything about our food system. So seed, soil, everything we are teaching in the schools, even colleges and institutions. Next please. And then कंज्यूमर अवेयरनेस, जैसे आज हम यहाँ पे है वैसे हर अलग अलग सिटीज़ में भी कर रहे हैं, तो इसका डिमांड भी बढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसका अवेयरनेस, फूड एज अ मेडिसिन, नॉट अ फूड जस्ट खाने के लिए है, तो ऐसे न्यूट्रिशनल फंक्शनल फूड का अवेयरनेस, इसलिए फूड फेस्टिवल, ग्रेन फेस्टिवल, राइस फेस्टिवल, मिलेट फेस्टिवल, इवन विलेज लेवल पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आपको इनवाइट हम करेंगे डेफिनेटली, एंड देन क्योंकि वहाँ आके, क्योंकि उनको भी लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है, रिस्पेक्ट, क्योंकि उनके प्लेट से भी फिंगर मिलेट गायब हो चुका है, क्योंकि पुअर मैंस फूड बोल रहे वो, ये जिनके घर में नागली का ब्लैक रोटी बन रहा है, बोलते कि हम ये गरीब लोगों के घर पे, क्योंकि व्हीट का रोटी बहुत अच्छा है। तो जब शहर के लोग गांव आते हैं एंड दे सी, अरे ये नागली का रोटी खा रहे हैं, फिंगर मिलेट का रोटी ये खा रहे हैं, नहीं ये अच्छा है, ठीक है, ये थोड़ा सोच बिहेवियरल चेंज की भी बहुत ज़रूरत है ये, क्योंकि हमारे टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और ये सब इसको चेंज नहीं कर सकता, तो ये सारी चीज़ें भी हम साथ में करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो ये मेरा लास्ट स्लाइड है। तो हमारा रोल भी हम कैसे डिफाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट अ वर्क ऑफ एक इंस्टीट्यूशन, एक साइंटिस्ट और एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एक कोई गवर्नमेंट सिस्टम, हर एक का रोल कुछ न कुछ इसमें है, तो वो अपने को ही डिफाइन करना है। एंड दिस इज़ नॉट अ प्रोग्राम, जस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम, हम लिंक कैसे रहे साथ में, एंड हाउ वी कैन डू अ बेटर थिंग्स फॉर अस ऑल्सो एंड फॉर
others also. इसमें हर एक का रोल है. साइंटिफिक चीज़ों को हम कैसे आगे लेके जाए, अवेयरनेस लेवल पे, ब्रांडिंग लेवल पे स्प्रेड करने के लिए इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें, हर एक चीज़ में हमें आप सबकी ज़रूरत है. और ये एक मास मूवमेंट कैसे बने तो ही ये काम बढ़ेगा और कम समय में हम रीच हो सकेंगे ग्रास रूट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंट्री. थैंक यू. So, what do you think of the presentation? Is it something new, something superb, very wonderful? Let's have a round of applause for both our speakers. So, very interesting. One of the speakers is a lawyer, another speaker is a chemical engineer. Both are speaking about organic farming for all our future. So now, we would like to take some question answers. I'm sure you have a lot of questions. And after this question answer session, now we have seen the professionals speak. We have seen wonderful exhibitions. Now finally, after the question answers, we want to introduce you to a local farmer. A farmer is going to come, he is going to speak his experience, his working with us and our interventions, and you can ask him and you can see how he's actually convinced about what he's doing. So first let's have some question and answers. Anyone like? So we'd like to invite our speakers to the front. I am a chef and I deal a lot with millets. But the challenge is I am a vegan chef, so the coating of the hard millet doesn't get very soft easily, the cashew curd and all. So one question is how can we get the coating of the millet easily out? Second is when we make the ambil, it gets in Mumbai, it gets spoiled very easily. When I make it in my Lonavala house, it stays for more hours. So is it something to do with the place or something? And the third and the last question is during Ekadashi, other than Sama, which millets are allowed? I will answer Ekadashi. So Ekadashi, that's the Samba is the only one we can say, but you can always try lots of tubers, which we showed it. So from tubers like there is air potato, it's local. So let's start with fine, Prabhu. During the millets, I wanted to know in the millets family, other than Sama, there's nothing else that we can use for Ekadashi. Yeah, as far as my knowledge goes. Okay, perfect. And about the coating. So the coating is very hard. So how do we deal with that? Actually, after processing, if there is a good processing, because the coating, outer coating, kernel is hard, and after that bran, and after that grain. Okay, so at this thing, as processing level, we can remove only coating, outer kernel, but the bran, which is really nutrition is in the bran. Okay? Yes, yes. So soaking and some other treatments only do it, because no any such a process to make it as soft or steaming like that, you know better than us. Yeah, because see, when I am a nutritionist also, when I suggest it to patients and cancer patients, so they are not allowed even one drop of oil. So they say it's so hard, we cannot even take it inside. So that is a very method of cooking is the one thing, and another recipes. Yeah, so I'm अभी definitely देखिए फिंगर मिलेट रोटी तो all सब लोग नहीं खा सकते, but liquid gruel from that खा सकते हैं. Then regarding another question that liquid gruel, so it's live, we cannot keep long time because it's a fermented. This thing, it's a bacterial culture like curd. So 8 hours is good? Yes, yes. Oh, Yeah. thank you, Dr. Not more than that. Not more than that. And without adding anything is a better. Because at community level, they are just adding small pinch of salt or thing, but nothing else. Previous night they are keeping that flour with water or curd, and then morning just boil it, nothing else. Thank you very much. One second. As far as your cooking thing is concerned, so usually you cook on the gas stoves here, right? In the cities. So my experience with cooking different kinds of rice is like we have the coal fire cooker where you can use it in city also. So you just add like
small amount of coal, and then you put all your different kinds of rice on the top, and then you leave it for 1 hour, and it gets easily cooked. Because we also tried with pressure cookers, we also tried on the pot, on the gas. But if you have this coal, that one NGO in Pune, that is Karve Institute, they have a coal fire. Aarti, there is one institute in Aarti in Pune. They come up with this still coal fire cookers. And that I have tried myself, and it very nicely gets cooked in that. Yes. Next question. Hare Krishna Muri, thank you for a wonderful presentation. My question was that many a times we have been told that whatever we need, our body needs, that is present in nature around us. So the millets also would be of different types in different areas. But now when it is being promoted or it is being sold, all type of millets will be sold everywhere. So does that make a difference? Or whatever is available, any millets that are available to us, we can buy. So that was my question. And also another second question is that we see that now we find pasta and these things made of sorghum, jawar or of ragi in shops. But they are priced so heavy that you can't buy them. It's like 150 grams will be costing some 300, 400 rupees. So we use ragi and jwari in our normal cooking. But if we want to encourage kids to eat and we want to buy, these things are priced so heavily that it becomes very difficult to purchase and use on a long-term basis. Once in a way we can use. For the second question, at present the cultivation is on very limited area. If you see finger millet in our district here at Palghar district, there is no surplus here because area under cultivation reduced because of number of issues. Resistant types are not there, labor issues, yield reduced, number of. So we are trying for that, improving the yield so that surplus produce will be there. But again, produced by communities but managed by some other professionals who have there is no link at all. That's why our program, what we are thinking, linking farmer with consumers, and there should be a clear to know your farmer or a family farmer. That won't be sold. Otherwise, पास्ता तो बिकेगा ही 300-400 रुपए को, जिसका रियल वैल्यू इतना हाई नहीं. तो वो एक है. Then second, about first question, रीजनल फूड सिस्टम का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है अपने अपने रीजन में. अभी देखिए मिलेट एक फैड जैसे भी बन रहा है शहरों में, क्योंकि सब मिलेट हमारे घर में चाहिए. कोदो मिलेट चाहिए, फिंगर चाहिए, सब चाहिए. लेकिन वो कैसे होगा क्योंकि हमारे डाइट का पार्ट कभी था नहीं. लेकिन आज न्यूट्रिशन का ये आ गया, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्री रिच, एंड देन अगेन ऑन मिलेट्स. तो ऐसा नहीं है हर एक का बॉडी. एक्चुअली आई एम नॉट ए न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, बट मुझे जो पता है विलेज लेवल पे भी, गांव के लेवल पे, वो कहीं कोई चीज आए बाहर से नहीं खाते. हमारे रीजन का जो रीजनल फूड है यहाँ का, हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन का, जैसे बाजरा, कोकण के लोग बाजरा नहीं खाते हैं क्योंकि इट इज नॉट इन कल्टिवेशन. ठीक है ना. तो ऐसा भी है इवन राइस में भी. ठीक है ना. थोड़ा ड्राई रीजन में जाएंगे, राइस थोड़ा सा ही उनके प्लेट में होता है, ज्वार का रोटी ज्यादा होता है. तो ये रीजनल एंड सीजनल फूड सिस्टम को भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. अभी ज्वार जो है ना, कहीं एक जो रिसर्च अभी आया है लेटेस्ट, उसमें महाराष्ट्र जो सिंस लॉन्ग रह रहे हैं, उनका जो मेजर फूड जो महाराष्ट्र का था ज्वार था. इसलिए मैंने जो सर्वे किया, क्योंकि वो स्टेटमेंट थोड़ा हिट किया मुझे कि ऐसा क्यों उन्होंने बोला है. तो ज्वार जो है 250 मिलीमीटर रेनफॉल in Satara district of Maharashtra, 1 or 2 locations, and then around 4,500 millimeter rainfall in Kalsubai region and some Gadchiroli places. So वहाँ पे भी ज्वार होता था. तो ज्वार एक कॉमन फूड था महाराष्ट्र का. Once again, I'll just see.
Like we also got requests from many people who said like, no, we will come and present the health benefits. But we said like, we want to make the customers aware, conscious about whole thing, and you have to make your choice of your food. Because it depends, like say, if you go to Rajasthan, they eat a lot of bajra. But along with the bajra, they eat a lot of ghee also. I was in on the border area in Barmer. It's a very remote at the Pakistan border and a very simple village. So every village, like everybody in their every plate, this much size of butter they gave it to all the people. So usually what happens is millet dries up like that. So you need to add some ghee into that. So better you always consult with your people who has got some Ayurvedic knowledge rather than like those who are just going on trial and error basis and saying like different, making very lofty claims about like recovering from this and that. So you be cautious about the whole thing. Because now there are so many different people come and start our different kinds of diets. We should see what suitable in Ayurveda, at the same time what is suitable in like regions and all that. So that's why you need like a doctor to see. Otherwise, like a different you may address one issue and then you will end up in something else. Questions? 1 second. Hare Krishna Prabhuji. Will you please explain the term family farmer? Do you mean that a city-based consumer should support the farmer and in return get their goods from the farmer? Family farmer. Yes, something like this, where you know your farmer and then you know what is the cost of production that he has. You know that family, what issues they face. And then you price it appropriately. It's just like 2 rupees, you get sometimes a cabbage. We buy in a huge quantity and feed it to the cows because it's much cheaper than buying grass. But then what happens to the farmers? Those who suffer. So basically, and that's one way good, like for you, agrotourism also, you can take like some days off from your busy schedule in the city and stay with the farmer and understand their lifestyle and gain a lot of values from that as well. So the thing is like knowing the person who is producing your food, so there is a less chance of cheating, there's less chance of food adulterations and so many things. And that's how there is like a very nice bonding between both of you. Both of us know each other's needs and concerns. Okay? Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी नेक्स्ट ईयर को गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया है 2023 में और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी वेबसाइट वगैरह चला रहे हैं और कॉन्टेस्ट भी हो रहा है. तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है? इज गवर्नमेंट रियली सीरियस? उनके साइंटिस्ट वगैरह जो इंस्टीट्यूशन है वगैरह, हाउ सीरियस दे आर टू टेकिंग दिस फॉरवर्ड? ऐसा है, देयर आर वेरी गुड थिंग्स हैपनिंग एट गवर्नमेंट लेवल, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है अभी. Orissa government, Orissa Millet Mission, they had brought this millet in value chain and then PDS में public distribution system में they had brought millet and they are doing a huge work on cultivation and then consumption and then commercialization. Then even at Andhra and Karnataka. Actually, Karnataka and Andhra, millet is a part of their diet, okay? And culture also, culture first, and that's why in a diet, but not in case of Maharashtra and few other states. So that's why millet food still exists more at each family consuming some millets in Karnataka. So government approach is now, but we have to think in that 4C approach, not only just promotion of millets for everything. So cultivation के भी there are number of issues as cultivation that need to address. So we are discussing with the governments also कि इसको कैसे हम आगे लेके जाए. And क्योंकि at consumption level, at community level वो भी आना
बहुत important है, along with getting some market to these millets. Do you think that if government puts this millets in PDS in Maharashtra, then the farmer will benefit because they will get the proper rate? Yeah, definitely, because now our government of this minimum support price, government has given 35 rupees per kg to finger millet. That is good. Initially it's 12, 13 rupees. Initially there is no MSP. That's why local vendors, this finger millet, they are on cheap rate वो purchase करते थे. अभी 35 rupees per kg government declared it. That's why now they have to give at least 35 rupees. So that is, but what we are discussing with government is that you can give a MSP to others also. Little millet, Varai Bagar, there is no MSP. Foxtail, Barnyard, no MSP. So at least that type of things happening at government level, and farmer will definitely benefit from that. Okay, we'll take one more question here. Hare Krishna Prabhuji. Based on Dr. Khadarwali's research, there are 5 types of millets. One is foxtail, barnyard, round top, little millet and kudo. They are supposed to be the positive millets grains, and finger millet, jawar and bajra are supposed to be neutral, and rice and wheat are supposed to be negative millets. What is your comment on this? I mean, based on his research, he claims this 5 top millet, positive millets will give the benefits to the health. So do you think it is? Yeah, definitely. That research is, I also interacted number of times with Khadarwali sir. It neutral millet and this positive millet. That is good. But along with that, regional food system का भी रोल बहुत important है. तो वो भी थोड़ा देखना जरूरी है. जैसे मैंने बोला कि sorghum के बारे में, one of the major crop, and part of that seeds, edges. Okay, so that also need to think, and उसमें भी हमें काम करना जरूरी है. क्योंकि यदि देखिए अभी फिंगर मिलेट, हम फिंगर मिलेट का रोटी खाया और उतना काम नहीं किया फील्ड में, एनर्जी लॉस नहीं हुआ, तकलीफ तो होगी ना. तो वो भी है. मिलेट इज गुड, बट फॉर whom and कितना, वो भी. See, millets will be available at different Mataji ko dena. Mic Mataji ko dena. So different avenues will be there for you to get it nowadays. And whichever you prefer, whichever you want, you can always take it. But as far as this millet consumption, the different people and different theories that are coming up, so I would say all of you make conscious decision and try yourself, but always consult your qualified practitioners rather than just few researchers over here and there. Yes. Hare Krishna Prabhuji. It is said that we should eat Purana rice, newly grown rice. So is it true with the other millets also? And why? What is the reason behind it? Not true. For rice it is okay, but for millet, जैसे millet old होते जाता है, जैसे for other millet, not this barnyard millet is okay, but for foxtail millet, then brown top millet, उसका quality degradation शुरू हो जाता है, क्योंकि outer cover थोड़ा ये है. ठीक है. राइस के बारे में उल्टा है. राइस जिसका इजी डाइजेस्टिबिलिटी, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है पुराना राइस. एसिडिटी नहीं बढ़ती है. एसिडिटी बढ़ती है जो फ्रेश राइस हमने कंज्यूम कर किया. इवन दूसरा भी थ्योरी उसमें है कि डायरेक्ट सीडेड राइस और ट्रांसप्लांटेड राइस. यदि कोकन बेल्ट का हम राइस खाएंगे तो वो इजीली डाइजेस्ट होता है. पेट फ्यू आवर्स में पूरा एकदम खाली हो जाता है. ठीक है. लेकिन हम वेस्टर्न महाराष्ट्र का राइस खाएंगे जो डायरेक्ट सीड से लेके कल्टीवेट हुआ, उसका टेस्ट भी अलग होता है. पारबॉइल राइस और अलग है. तो ऐसे अलग अलग उसमें भी ये है. So, एक्चुअली हम ऐसे एग्जीबिशन वो भी करते first part of, because there will be plenty of questions, all of us will be available to you to answer this. As we announced, we'll talk to the farmer first, farmer's experience. So
many questions are there. We can have later interaction with the speakers. Finally, we'd like to call one of our local farmers. Exhibition will have time, so we can spend the time speaking to them. हमारे साथ अभी जो फार्मर आ रहे हैं, ही इज़ अ इनोवेटिव फार्मर, और हमारा जो प्रोग्राम है सीड्स फॉर लाइफ, उसका एक बैकबोन है, क्योंकि ऐसे ग्रास रूट इनोवेटर पीपल हमारे साथ है, इसीलिए हमारा ये जो भी रिसर्च है, हमारे फाइंडिंग्स है, जिसको हम आगे लेके जा रहे हैं पार्टिसिपेटरी वे से। भोये जी विक्रमगढ़ ब्लॉक में से है, इनोवेटिव फार्मर है, उन्होंने बहुत सारे राइस कल्टीवेट किए हैं, देन मिलेट भी कल्टीवेट वो कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने ट्रेन किया है, मोर देन 2000 से ज़्यादा लोग उनके खेत पे आके गए हैं, एंड ही इज़ अ इंस्पिरेशन फॉर दैट ब्लॉक, Vikramgarh block, and then Wada block and nearby areas. Even government officers also coming there. So हम थोड़ा सा उनसे जानेंगे कि उनके एक्सपीरियंसेस क्या है। पहिल्यांदा माझे नाव लहू शंकर भोये, जिल्हा पालघर, तालुका विक्रमगड, गाव वसुरी। 2 वर्ष झाली, 2020ला माझ्याकडे 54 जाती भाताच्या लावलेल्या, त्या 54 जाती एकदम सक्सेसफुल करून दाखवल्या। सर आमच्या सोबत होते। त्याच्यानंतर माझ्या आजी आणि आजोबा परंपरागत शेती करत होते, पण ती शेती आता राहिली नाही। तर 2016ला हरे कृष्ण संस्था म्हणजे इस्कॉन हे आमच्याकडे आले वसुरी गावामध्ये, आणि त्यांनी सांगितलं की आपण देशी बियाणं हे तुम्हाला माहिती आहे का? तर ते आम्हाला आजी आजोबांनी सांगितलेलं थोडं थोडं माहिती होतं, पण नक्की काय आहे भानगड ही आम्हाला माहीत नव्हती। तर आम्ही त्यांच्याकडनं एक चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन घेतलं, आणि सेंद्रिय शेती ते म्हणाले की सेंद्रिय शेती ही आपल्याला करायची आहे। तर सेंद्रिय शेतीमध्ये आम्ही सहभाग घेऊन, आणि आमचा एक हरित क्रांती बचत गट नावाचा एक गट आहे, तो गट स्थापन केला, आणि त्याच्यामधून आम्ही सेंद्रिय शेती करायला लागलो। एक मिनिट, मी थोडंसं सांगतो सगळ्यांना। लहू भोये इज फ्रॉम वसुरी विलेज, विच इज अ रिमोट विलेज इन विक्रमगढ़ ब्लॉक ऑफ पालघर डिस्ट्रिक्ट. He is saying that earlier we know the things, these varieties, but from our grandfather, father, but all these things lost, and after that ISKCON GV program Seeds for Life came in our village. They discussed with us, and he had planted 54 different varieties of rice, and now he's saying that most of them are very good over there, and they selected types, and then multiplying in that village, and they had formed one farmers group over there, and they are in conservation and multiplication of these varieties. त्याच्यामध्ये देशी बियाणं आम्ही आत्ता सध्या तरी आपल्याकडे देशी बियाणं अवेलेबल आहे, आणि ते आम्ही आता सरांच्या मार्गदर्शनाने आस्ते आस्ते चालू ठेवलं आहे, आणि ह्याच्या पुढे आम्ही अशीच परंपरागत शेती करणार, आणि ही आपली जी रासायनिक शेती आहे ही नष्ट करणार। कारण मानव विकासमधून आम्हाला औषधांचा एक केंद्र उभारून दिलेलं आहे। मानव विकास जे साहेब आहेत त्या साहेबांनी आम्हाला केंद्र उभारून दिलं, आणि त्यांनी औषधं तयार करायला सांगितली, म्हणजे झाडपाल्याची, कडुलिंब, करंज, गुळवेल, त्याच्यानंतर गूळ, ताक, ह्याच्यानी जी आम्ही औषधं बनवलीत, आणि ती औषधं आपल्याकडे सक्सेसफुल झालेली आहेत। आता जवळजवळ
2,000 लोकांना आम्ही ते औषधं वाटपसुद्धा केले. आता 16-17 तारखेला 1700 लिटरची जी ऑर्डर आलेली होती ती 1700 लिटरची ऑर्डर आम्ही पूर्ण केलेली आहे. आणि पहिल्या डेमोमध्ये एक 10,000 लिटर आम्ही औषध तयार केलं आणि पूर्ण ते ऑर्गॅनिक पद्धतीने आम्ही शेतकऱ्यांना सांगतो का बाबा तुम्ही ऑर्गॅनिक पद्धतीने जर शेती कराल तर तुम्ही पुढे जास्त दिवस काढाल. नाहीतर आज बघा आमच्याकडे आता मुंबईमध्ये मी नाही काय सांगू शकत पण आमच्याकडे 15-16 वर्षाची जी मुलं आहेत त्यांचे सांधे दुखायला लागलेत. हे सांधे का दुखतात? सांधे दुखण्याचे एकमेव कारण की हे जे आपण रासायनिक जे फॉर्म्युला आपण जो पोटामध्ये टाकतोय जो अन्नाद्वारे आपण आतमध्ये घेतोय ते पूर्ण सांधे पकडतात. पूर्ण सांधे पकडल्यानंतर त्या मुलं जास्त काळ काय ते टिकू शकत नाही. आज जवळजवळ 40, 45, 50 वर्षाची मुलं डायरेक्ट म्हातारे दिसायला लागलेत. सगळ्यांचे केस पिकायला लागले, डोक्यावरचे केस जायला लागलेत. Then growth promoter, they had established organic input production unit over there through support from GEV and one of the government program, human development program. Our friend commissioner sir came and they had seen their program and they had supported around 16 lakh rupees through government program. They had established the input production unit and now they are in production, use and sale of that input. Normally it takes a much price, but they are selling in 20 rupees per liter for farmers, and about 2,000 farmers benefited from that. And one important thing you told just now, joint pain problem, and then children's looking old, though age is very low. So joint pain, and it is because he is saying that chemical pesticide use increased in our villages also, and even chemical fertilizer. So food what we are getting, that also not of good quality. So this is the organic farming and indigenous seed conservation and multiplication is the only way. जर आपल्याला जास्तीत जास्त वर्ष हे दुनिया हा देश बघायचा जर असेल तर आपण ऑर्गॅनिककडे गेलं पाहिजे. ऑर्गॅनिक हे एक फॉर्म्युला असा आहे की याच्यामध्ये जो 60 वर्षाचा म्हातारा पण स्ट्रॉंग बनू शकतो, 70 वर्षाचा म्हातारा पण स्ट्रॉंग बनू शकतो. कारण याच्यामध्ये ज्या वनस्पती येतात, कडुलिंब झालं, त्याच्यानंतर गुळवेल झाली, ह्याचा जो फॉर्म्युला आहे हा जर फॉर्म्युला त्याच्यानंतर आपली तुळस झाली, त्या तुळशीमध्ये बरेचसे प्रकार असतात. ते जर आपण त्याचा जर सकाळी काढा घेतला, चहा पिण्यापेक्षा काढा घ्या, जर आपण काढा घेतला तर तो काढा आपल्याला अगदी ह्या आपल्या शरीरासाठी चांगल्या पद्धतीने तो आपल्या शरीराला लाभू शकतो. बस, थँक्यू. Food and their healthy drinks instead of a chai or tea. So kashai, then this tulsi extract like that they are taking in there, and we advise you all of us to take instead of a tea. They have their own formulations at village level, and tea without milk they are taking. Normally tribal areas they are not taking milk. So like that, there are a number of innovative farmers who are the backbone of our program, and that's why spread, because 10-15 our people team, our staff, we cannot spread the things that, so that's why at each village level we have developed some good resource person, we have trained them. Already they had a knowledge, but along with that some professional inputs we have given, training programs, some exposure to them, and then now they are spreading this information, all this knowledge to other villages and then different parts of states also. Hare Krishna. So we have come to the end for today for the discussion. Now the next program will be, we all be heading downstairs where we can also see the exhibitions as well as we have heard about all the items and saw some food items, isn't it? So now to sample it. So I would just like to give a vote of thanks to our two speakers and to also to Lahu Boy
sir who came all the way to Mumbai. He came with his family, we housed him 2 nights to stay here. We'd also like to invite all of you, if you are interested, we talk about family farmer. So if you like to get connected, you like to see the initiatives, visit the initiatives, that is definitely possible. Most of you have known our project, Gordhan Eco Village, in the Wada area. You can also directly connect with the farmers downstairs, farmers here, visit their places, see the initiatives for yourselves and get in touch. That is very much needed, like Prabhuji's mentioned, to support them. If you eat that ragi roti from their plate, then they know that this is accepted. It's not, they don't think it's a poor man's food. So that's very, very important from our part what we can play with. Right? So then again, I'd like to thank all of you here for taking out your time and on a Saturday and coming here to our downtown temple in South Mumbai and spending a day to learn something very important about food. And with that, we'd like to end this session of discussion. We will see you again informally. You can meet our speakers. Thank you all very much. Hare.